गाइस, इस वीडियो में आप लोग जानोगे क्या ये यूनिवर्स एक्सीडेंटली बन गया है, क्या ये यूनिवर्स नेचर के माइंडलेस प्रोसेस ने बना दिया है, और साइंटिस्ट इस यूनिवर्स के फंक्शंस को देखने के बाद क्या कहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जब साइंटिस्ट ने हमारे यूनिवर्स को देखा तो उन्होंने पाया कि हमारी यूनिवर्स में गैलेक्सीज, स्टार्स से लेकर एटम्स और फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स सब के सब फाइन ट्यून्ड है। सर मार्टिन रूइस कहते हैं जहां पर भी फिजिसिस्ट देखते हैं उन्हें फाइन ट्यूनिंग की ही एग्जांपल्स नजर आती हैं। फाइन ट्यून क्या होता है कि आप किसी भी चीज को अच्छा करना चाह रहे हैं, बेहतर बनाना चाह रहे हैं, तो उस चीज में छोटी सी चेंजिंग करके आप उसे बेहतर बना सकते हैं। इसे फाइन ट्यून कहते हैं। तो जब साइंटिस्टों ने यूनिवर्स को देखा तो वो फाइन ट्यून्ड निकला, मतलब हमारी यूनिवर्स की बनावट, उसका स्ट्रक्चर, डिजाइन, उसके लॉज ऑलरेडी फाइन ट्यून्ड हुए हुए हैं। मतलब ये है कि अगर ग्रेविटी का फोर्स थोड़ा कम होता या थोड़ा ज्यादा होता तो हम इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते। तो हमारा ये यूनिवर्स बुनियादी कांस्टेंट और क्वालिटी से बना हुआ है। साइंटिस्टों की क्लिप सुनिए। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हमारी यूनिवर्स खुद फाइन ट्यून्ड है, और अगर हम यूनिवर्स की फाइन ट्यूनिंग में किसी भी चीज में छेड़छाड़ कर दें तो हम यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते हैं। क्लिप सुनिए। For over 16 years. What we've discovered in the last few decades is that the properties of the universe in general and our planet in particular are fine-tuned, not just for our survival, but actually for our thriving, our benefit. You see, our universe is kind of like a finely tuned machine. Scientists have found that there are about 20 numbers, 20 fundamental constants of nature that give the universe the characteristics we see today. These are numbers like how much an electron weighs, the strength of gravity, the electromagnetic force, and the strong and weak forces. Now, as long as we set the dials on our universe machine to precisely the right values for each of these 20 numbers, the machine produces the universe we know and love. But if we change the numbers by adjusting the settings on this machine even a little bit, the consequences are dramatic. For example, if I increase the strength of the electromagnetic force, atoms repel one another more strongly, so the nuclear furnaces that make stars shine break down. The stars, including our sun, fizzle out, and the universe as we know it disappears. Laws of physics could have been very different. You could imagine a world that didn't have electrons in it. There's nothing wrong with that in basic theory of mathematical theory of physics. You could just throw away the electron. What would happen if you threw away the electron? No chemistry. No atoms, no chemistry, no biology. The gravitational force between the electrons and protons compared to the electrical force, the gravitational force is completely negligible. Why is gravity so much weaker than the other forces? Well, we don't really know, but here's what we do know. If it were just even a little bit stronger, stars would burn out too quickly, they wouldn't live long enough for life to evolve. Instead of stars, instead of galaxies, we'd have black holes. So everything seems to be almost on a knife edge, that if you were to change the rules of physics, the laws of physics, even a little bit, the world as we know it wouldn't exist. Fine-tuning in physics refers to the fact. तो सुना आपने, माने जाने फिजिसिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट सभी कहते हैं हमारा यूनिवर्स की उम्दा बनावट इसे बहुत खास बनाती है। और सिर्फ ये इतना ही नहीं है, पूरी की पूरी लिस्ट है फाइन ट्यूनिंग की। अगर हम इन फोर्सेस को जरा सा बढ़ा दें या जरा सा कम कर दें तो ना स्टार्स होंगे, ना प्लैनेट्स और ना जिंदगी होगी। हमारी यूनिवर्स बहुत खास है। साइंटिस्टों की क्लिप सुनिए। Our universe seems to be defined by a set of numbers which in some sense look special. If we had different numbers, we would end up with a sterile universe. People react to this seeming coincidence in a number of ways. You could say it's the outcome of some kind of design or providence. We could
say it's a brute fact we have to accept, because these numbers might be determined by some theory which we haven't yet discovered. Strange results have come up in about the last 20, 30 years, particularly in astronomy and also in quantum physics, which suggests that the universe actually may have a purpose, and some physicists are now suggesting it does have a purpose. And this has come out of some findings about some of the fundamental numbers in atomic physics. For example, the strengths of the other forces are all important, the masses of the various subatomic particles. This is one of a long list of properties in underlying physics that seem to be prerequisites for a universe with life. If all of these things were even a little bit different, then life, certainly life as we know it, could not exist. तो सुना आपने, ये यूनिवर्स बहुत बहुत खास है। लियोनार्ड सस्किंड ये भी एक एथियस्ट फिजिसिस्ट हैं और ये बता रहे हैं कि हमारी यूनिवर्स एक नाइफ एज पर टिका हुआ है। And so everything seems to be almost on a knife edge. और दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग जो कि एक एथियस्ट फिजिसिस्ट है, उसने अपनी किताब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखा है कि इफ द एक्सपेंशन रेट ऑफ द यूनिवर्स वाज डिफरेंट बाय 1 पार्ट इन 1000 मिलियन अ सेकंड आफ्टर द बिग बैंग, द यूनिवर्स वुड हैव कोलैप्स्ड बैक ऑन इटसेल्फ और नेवर डेवलप्ड गैलेक्सीज। मतलब ये है कि बिग बैंग के फौरन बाद जितनी स्पीड से हमारी यूनिवर्स फैल रही थी, अगर उस स्पीड के टाइम के 1 सेकंड के अंदर अगर हम 1000 मिलियन टुकड़े कर दें उस सेकंड के, तो बहुत छोटा जो हिस्सा टाइम का बचेगा। तो अगर इतना सा हिस्सा भी यूनिवर्स के फैलने की स्पीड में इजाफा हो जाता या स्पीड में कमी हो जाती, तो ये यूनिवर्स अपने ऊपर ही गिरकर खत्म हो जाती या गैलेक्सीज कभी बनते ही नहीं। तो ये यूनिवर्स बिग बैंग के टाइम से ही कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हुआ था। और स्टीफन हॉकिंग ये भी कहता है कि जबरदस्त हकीकत ये है कि इन नंबर्स के वैल्यूज को इस तरह से फाइनली एडजस्ट किया गया है, इस तरह से सेट किया गया है ताकि इससे लाइफ पॉसिबल हो सके। चलें मैं आपको प्रोफेसर एलन गुथ की क्लिप सुनवाता हूँ। क्लिप सुनिए। For example, if we go back to say 1 second after the Big Bang, at that point the expansion rate and the mass density have to have been adjusted to each other just right, so that the universe is just at this critical point. If the universe at that point were expanding just 1 part in the 15th decimal place faster, the universe would have flown apart without galaxies ever having had a chance to form. On the other hand, if the expansion rate were just a little slower than what we think by change of 1 in the 15th decimal place, then the universe would in fact have expanded to a maximum size and collapsed. We would never have even reached the time in the universe at which we're living. तो सुना आप लोगों ने दोस्तों, यूनिवर्स बिग बैंग के टाइम से ही फाइन ट्यून बनना शुरू हो गया था। मतलब जो लोग ये कहते हैं कि पहले सब कुछ सिंपल था, बाद में फाइन ट्यून होने लगा या बाद में कॉम्प्लेक्स होने लगा, तो उनके लिए ये जवाब है कि यूनिवर्स शुरू से ही कॉम्प्लेक्स था। कोई भी इस यूनिवर्स को एक्सीडेंटल नहीं मान सकता है। चलिए मैं आपको प्रोफेसर बर्नार्ड कार की क्लिप सुनवाता हूँ। क्लिप सुनिए। This is a diagram, it's called the pyramid of complexity, and what we've got here, we've got the different levels of structure in the universe, and at the bottom we've got the things like quarks that make up the atoms, and the atoms build up to make molecules, the molecules build up to make living cells, the cells make organisms, and eventually we end up with brains and consciousness. It's rather hard to estimate what the probability is, but it was clearly very, very unlikely that those fine tunings which allowed this pyramid of complexity to arise would be there. और दोस्तों, सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता है। साइंटिस्ट ने एक फोर्स डिस्कवर करी है जिसे कहते हैं डार्क एनर्जी या फिर कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। साइंटिस्ट ने पाया है कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट बहुत ही ज्यादा फाइन ट्यून्ड है, जिसको साइंटिस्ट खुद मानते हैं कि इस डार्क एनर्जी की फाइन ट्यूनिंग कोई इत्तेफाक हो ही नहीं सकती। चले मैं आपको माने जाने फिजिसिस्ट लियोनार्ड सस्किन की क्लिप सुनवाता हूँ, जो कि एक एथियस्ट हैं। The fine tunings, how fine tuned are they? Most of them are 1% sort of things. In other words, if a thing is 1% different, everything gets bad. And a physicist could say maybe those are just luck. On the other hand, this cosmological constant is tuned to 1 part and 10 to the 120 decimal places. Nobody thinks that's accidental.
that is not a reasonable idea. That something is tuned to 120 decimal places just by accident. That's the most extreme example of fine-tuning. No force in the history of cosmology has ever been discovered to be that finely tuned. The cosmological constant needs to be set to 1 part in a trillion, 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 trillion. Otherwise the universe would be so drastically different. The amount of it is bizarre. It's a number that has basically a decimal point, 122 zeros, and something like a 138 at the end. It's hard for us to imagine starting with a theory, doing calculations, and after some number of pages of scribbling, having 0.00000, all these zeros, and then a 1 pop out of our equation. Why it came out after everything was settled in this very, very tiny range, which allows the world to have expanded at not too fast a rate, we honestly don't know. But one thing we do know is that intelligent life probably couldn't exist in the universe if dark energy wasn't just how it is. Let's talk about one of them, though, that has some particular strangeness to it, the so-called cosmological concept. That's right. That's the one which is really on a knife edge. Okay? It is on such a narrow knife edge that it's almost inconceivable. If you were to change it just the tiniest bit, we couldn't be here. So the dark energy is not exactly 0, but the first 122 decimal points are 0. That's crazy. और अब तो साइंटिस्टों ने भी कह दिया है कि डार्क एनर्जी की फाइन ट्यूनिंग कोई इत्तेफाक नहीं हो सकती है। ये जितनी भी लिस्ट है फाइन ट्यूनिंग की, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकती है। कोई नहीं सोच सकता कि ये सब कुछ एक्सीडेंटली हो गया है। और डेविड ड्यूच, जो कि एक फिजिसिस्ट हैं, वो कहते हैं अगर कोई ये दावा करता है कि यूनिवर्स में जो खास खसूसियात हैं उससे सरप्राइज नहीं हुआ, तो वो रेत में अपना सर छुपा रहा है, हकीकत से जान छुड़ा रहा है। और सुनिए, जब हमने हिग्स बोसोन को ढूंढ लिया था, तब साइंटिस्टों को पता चला कि हिग्स बोसोन भी डार्क एनर्जी की तरह बहुत फाइन ट्यून्ड है। क्लिप सुनिए। If the Higgs boson were not also finely balanced in a similar way to the way the dark energy is, that would be very dangerous because it would in effect mean that gravity was much stronger. So the Earth would probably collapse into a black hole. मतलब कहां तक इस यूनिवर्स को इत्तेफाक माने भाइयों? हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। हमें यह मानना ही पड़ेगा कि इस यूनिवर्स को किसी सुप्रीम बीइंग ने बनाया है। कहां तक इत्तेफाक कहें, ये यूनिवर्स इत्तेफाक नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल है इस यूनिवर्स का इत्तेफाक होना। और सुनिए, साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि जब हम कहते हैं कि ये यूनिवर्स जस्ट बाय लक बन गया है, तो ये एक स्ट्रेच हो जाता है। मतलब मैथमेटिकल नंबर इस यूनिवर्स को एक इत्तेफाक नहीं कह सकते हैं। यूनिवर्स को बाय लक कहना एक बेवकूफ़ी है। साइंटिस्ट इस बात को जानते हैं और इसी वजह से सुप्रीम बीइंग का एक्सप्लेनेशन फाइन ट्यूनिंग के लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। क्लिप सुनिए। How did this come about, this rather terrific luck? Of course, one of the first explanations that comes to mind is that there was a tuner or a creator, or if you like, God. And obviously for people of a theological disposition, the idea that the fine-tuning is evidence of God. Physicists did not want to accept the idea that the laws of nature might be controlled by the benevolence of nature. There should be no reason why the luck should just have it that we can exist. It's too much. It's a stretch. It's much too far to stretch. तो अब ये सब कुछ जानने के बाद कि साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि हमारा यहाँ होना कोई इत्तेफाक नहीं है, तो अगर कोई ये मानता है कि हमारी ये जो एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में ये बाय लक हो गया है, तो वो खुद अपने आप को धोखा दे रहा है।